દુનિયાની નંબર 1 એર કન્ડિશનિંગ કંપની ડાઇકિન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જાપાનની 100% સબસિડિયરી ડાઇકિન એર કન્ડિશનિંગ ઇન્ડિયા દ્વારા ભારતીય ગ્રાહકો માટે ઘર આંગણે ડિઝાઇન કરેલ અને ઉત્પાદન કરેલ સ્પ્લિટ રૂમ એસીની નવી રેન્જ રજૂ કરવામાં આવી છે અને આ નવી યુ સિરીઝ રેન્જ ભાવિ પેઢી પ્રમાણેની ટેકનોલોજીઓથી સજ્જ હોવાથી ગ્રાહકોને તેમના સંકુલોમાં હવાની શુદ્ધતા અને ઠંડકને જાળવી રાખશે। ડાઇકિન ઇન્ડિયાના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર શ્રી કે.જે. ઝાવાએ જણાવ્યું હતું કે ડાઇકિનમાં અમે મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટો માટે ધ્યેય ધરાવીએ છીએ, જે દરેક ભારતીયને જરૂરતોની પહોંચી વળવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને આ એસી હવે જરૂરત બની ગયા હોવાથી ઉભરતી ગ્રાહકોની આકાંક્ષાઓને પહોંચી વળવા માટે પ્રોડક્ટ ઇનોવેશન અને સ્ટાન્ડર્ડમાં પરિવર્તનની જરૂર છે। ત્યારે ડાઇકિન એસીની નવી રેન્જ વધતી ભારતીય વસ્તીને ઉચ્ચ ઉર્જા, ઓછા ખર્ચ પર કોઈપણ અસર કર્યા વિના જૂની અને પ્રાચીન ટેકનિક્સને અપગ્રેડ કરવા સક્ષમ છે। आज हम सूरत मार्केट में आए हैं टू लॉन्च आवर लेटेस्ट एंड फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स विच वी कॉल इट यूवी सीरीज। दे आर सीरीज फॉर रेजिडेंशियल एसी टू ऑफर द बेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स फॉर द मार्केट। सूरत मार्केट के लिए आज हम आए। ग्रेजुअली वी आर डूइंग सच इवेंट्स एट वेरियस लोकेशंस। सो इस सीरीज में मेन पॉइंट है, 3-4 मेन पॉइंट बताएंगे हम। वन इज एनर्जी एफिशिएंसी। दे आर द मोस्ट एडवांस्ड 4-star range of ACs which are 15% on an average more efficient than what is available in the market today in the range of 3-star ACs जो होता है उससे। देन हमारा हाईएस्ट ISCR देखें वो 5-star में हमने 6.2 पे इंट्रोड्यूस किया है which is almost 38% more efficient than the regular 5-star ACs। So these ACs are futuristic in the sense future में जो B-star level change होने वाला है 1 जुलाई से as per government norms, these are ready for that also। One is that। Second is इसमें smart AC technology है which we call it Wi-Fi। So on top range that Wi-Fi is inbuilt and otherwise it's optional in the sense Alexa, Google Home उस सब से these can be operated, voice enabled ACs है, remote से भी operate हो सकते हैं। That's the second technology which we are giving। Third is on indoor air quality side we have our patented streamer discharge technology जिसमें plasma discharge होता है which is high speed electrons which kind of decomposes the odor and all harmful gases, and also it has been found to be efficient for control to the extent of 99.9% for COVID virus control। That is second point। Then third is dew clean technology जो atmospheric water होता है उसको यूटिलाइज करते हैं जो कि नॉर्मली कंडेंसेट वाटर के रूप में बाहर निकलता है, उससे ऑटोमेटिकली हमारा इंडोर हीट एक्सचेंजर क्लीन होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है सो दैट एयर फ्लो अच्छा मेंटेन हो, अंदर का हाइजीन बेटर रहे व्हेन योर इंडोर हीट एक्सचेंजर इज क्लीन। सो अगेन इट्स हेल्दी पॉइंट। Then on further on technology point is we have provide anti-corrosion features by way of usage of BTA oil on our copper coil. That's another feature। Then we have triple display technology on our remote which will have display of set temperature, actual temperature in the room, and main interesting point is the power consumption। Power consumption is not theoretical but it's a real time power consumption। So a customer can visualize कि पावर कंजम्पशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, सो दे कैन चेंज द सेटिंग ऑफ टेम्परेचर एज पर दैट बैलेंसिंग कैन बी डन। एंड another interesting point is our machines are having swing technology of compressor which is highly advanced than what is available in the market क्योंकि मार्केट में नॉर्मली रोटरी कंप्रेसर टेक्नोलॉजी होते हैं, तो स्विंग कंप्रेसर में लेस फ्रिक्शन, लेस वियर एंड टियर, सो ऑब्वियसली लेस पावर कंजम्पशन होता है। सो दीज आर द मोस्ट एडवांस, दे आर ऑल मेड इन इंडिया। सी ये तो मिडिल क्लास का हर क्लास के लिए अवेलेबल है क्योंकि जैसे मेरे कलीग ने मिस्टर विकास जी ने भी बताया ये मोस्ट इकोनॉमिकल रेंज ऑफ एसी है बाय वे ऑफ ओनरशिप। क्या होता है कभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी को शुरू की प्राइस से नहीं देखते हैं, उसको देखिए शुरू में क्या प्राइस है परचेज का और अगले 10 साल मेरा क्या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है बिल आने वाला है, दोनों A+B कंबाइन कीजिए। सो दे आर द मोस्ट इकोनॉमिकल रेंज ऑफ एसी एवर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट क्योंकि 15% एनर्जी से। सो मिडिल क्लास को खाली इनिशियल मनी नहीं देना है परचेज के लिए, पावर बिल भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, तो ये 10 साल तक तो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ही है, तो जो एक्स्ट्रा देंगे वो तो 1 साल में रिकवर हो जाएगा, अगले 9 साल तो सेविंग ही सेविंग है। तो इससे बढ़िया ऐसी कोई हो ही नहीं सकता मिडिल क्लास के लिए।
मेंटेनेंस रेगुलर जो होता है, कोई इसमें एक्स्ट्रा मेंटेनेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने बताया कंप्रेसर मेन होता है मेंटेनेंस का। कंप्रेसर तो इसमें फ्रिक्शन लॉसेस कम है, सो ब्रेक डाउन भी कम होगा इसमें, ऑब्वियसली फ्रिक्शन लॉसेस, वियर एंड टियर कम होगा। तो और वैसे भी हमारा कंप्रेसर की वारंटी लंबी है इसमें, दीज आर इन्वर्टर 10 साल तो कंप्रेसर वारंटी है, तो मेंटेनेंस कोई इसके कारण इंक्रीज नहीं होने वाला है, इट्स अ रेगुलर होगा। 10 साल वारंटी कंप्रेसर की है, पीसीबी भी 5 इयर्स वारंटी है। तो अगर दो चीज़ यही मेन होती है, क्योंकि कंप्रेसर और पीसीबी अफेक्ट होती है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन से, सो दोज आर कवर्ड। सो मेंटेनेंस इज नॉट अ पॉइंट टू बी वरीड बाय एनीवन ऑनेस्टली। इससे बढ़िया एसी हो ही नहीं सकते इंडियन मार्केट के लिए। ડાઇકિન ઇન્ડિયા આત્મનિર્ભર ભારતને મહત્વ આપવાના દ્રષ્ટિકોણ સાથે ભારતમાં રોકાણ કરવા માટે આ અવ્વલ અને અગ્રગણ્ય પગલું લેવાની જાપાનની પ્રથમ એસી કંપની છે, જે ભારતમાં ભવ્ય ઉત્પાદન તકો ધ્યાનમાં લેતા અને ભારત સરકારના મેક ઇન ઇન્ડિયા ધ્યેયમાં યોગદાન આપવા માટે ડાઇકિને રાજસ્થાનના નિમરાણામાં એકમો પછી તેનું ત્રીજું ઉત્પાદન મૂળ સ્થાપવા માટે સૌથી ઉત્તમ આગામી સ્થળમાંથી એક તરીકે દક્ષિણ ભારતના શ્રી સિટીની પસંદગી કરવામાં આવી છે। કેમેરામેન આનંદ ગુરવ સાથે એજાઝ શેખ, ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત।